तुला मेसेज सेंड करतो, तुला ईमेल, तुला आवाज येते काय? जॉइन हो रही है सर. बाहेर जा बाहेर. आणि ओपन पीपीटी. ओके सर, पीपीटी. The examination is to the most of the important and highest issue to go to the best company or go to the higher salary. Okay, the main advantage of GPAT is you are all know about the stipend. What is the stipend is 12,400. ओके, एआईसीटी जो अपना है वो क्या करता है, अपने को स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है. कितना स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है? नियर अबाउट 12,400 स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है. ये अपने को सबको मालूम है. ओके, देन ऑल वी नो और ऑल वी GPAT, our some teachers are also given the 2 lecture related to the GPAT examination. That is the Rao Sahib Hegde sir and Kiran. So, important of GPAT, what does and do's from the GPAT, need of GPAT, what is the strategy of GPAT, all are given by the Dr. BAVSKAR sir and as well as the Rao Sahib sir. So today we will discuss about the important books and important notes for the GPAT examination. Okay, we will know
The paper, already know the paper contains near about 125 MCQ question. Each right question having a 4 mark. Total mark is near about 500 and time limit of the exam is 180 minutes. The negative mark of the question is -1 for each wrong answer. If a question is right, then the mark is 4 mark. Okay. Then next one important thing is that the day by day the GPAT examination is toughest because of maximum students are prepared for the GPAT examination because they have know the importance of GPAT, the stipend and fees all are okay. Sir, some technical issue, my voice is not clear. I am clarify them. The standard of the entrance exam has increased many-fold from last few years. This is why now the student must prepare for the exam with double G. Cracking the GPAT examination 2021 requires hard as well as smart work and determination to go pass through the hurdle of difficult question. ओके मतलब डे बाय डे क्या हो रहा है कि जीपैट का जो एग्जाम है वो टफ होते जा रहा है। क्यों? मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जीपैट प्रिपरेशन टेक्निकली कर रहे हैं, इस वजह से उसका जो स्कोर है उसका तो डे बाय डे जा रहा है। अब लास्ट ईयर का ही देखिए कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 163 का है। Previously in 2013 or 2014 near about 185 जो 2014 में हमने क्रैक किया था तो ओपन था 125 ओके और 100 का था। इन लास्ट 2000 cut off of general category is 163 and the cutoff of OBC candidate is 31. Okay, the main important thing is that okay, so let us know we are okay. Sir, can you please open a slide? Sir, please, can you open the slide? Next. Next slide. Okay. Okay, wait. The important notes about the GPAT. GPAT preparation can be done by using different technique to study, solving previous year question paper and mock paper. Second point and second important thing that aspirants should be thorough with GPAT exam pattern to prepare well for the exam. Focus on all the important chapter covered in pharmacology as 25 to 30 questions are asked from the last year related to the pharmacology, and it is important for scoring of the GPAT. फार्माकोलॉजी को जो सब्जेक्ट है वो जीपैट के लिए important scorer subject है. If you are low the pharmacology, then you are get 100% rank in the GPAT examination, because pharmacology is the subject. If you read properly, then this is studied to both pharmacology as well as medicinal chemistry. यदि तुम फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट सीरियसली और ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारा ये जो बेनिफिट है वो तुम्हारे फार्माकोलॉजी के लिए ही होगा और दूसरा जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए भी होगा.
because the same point in the pharmacology as well as in medicinal chemistry is that all the drug, then their mechanism of action, then their adverse drug reaction, some important drug adverse drug reaction, then their toxicology, then after their adverse drug reaction, drug interaction, drug metabolism, pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters are all same. Only thing is that structure related properties are different in pharmaceutical chemistry. Okay, so that if you carefully read the pharmacological subject, then you are definitely qualify or definitely get a higher rank in GPAT examination. If you love pharmacology, then you definitely qualify the GPAT exam. Okay, then next one is the standard of the entrance exam has increased many fold from last few years. हर साल क्या हो रहा है, जीपैट का जो कट ऑफ है हर साल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि द वेटेज ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन इज डे बाय डे आर increase, because some students are interested to got a got or admitted to the NAPER examination as well as main important institution or regulatory bodies like Indian Chemical Technology ICT Mumbai, for because of why, because of the max, these are the institute are the campus entry are arranged, so that's why maximum student क्या कर रहे हैं कि जीपैट में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रैंक आए और ज्यादा से ज्यादा और हाईएस्ट जो अच्छा से अच्छा कॉलेज उनको क्या हो एडमिशन मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज also गवर्नमेंट कॉलेज as well as the NIPER examination. Then the cracking the GPAT 2021 requires hard as well as smart work and determination. Sir, next slide. Okay, sorry, one mistake, print mistake is that clearing the GPAT 2021 is not an easy task unless you have prepared well for the exam. In this article, we have mentioned certain GPAT 2021 preparation tips and tricks which can help you do well in the exam. Nowadays, the level of unpredictability has increased in the exam. That is why students should study all the topic thoroughly. The preparation tips candidate can use for each section are given below. Next slide. All we know the paper contain near about 125 MCQ. Each right answer 4 mark. Total mark is 500. Time limit is 180. Negative mark 1 mark. Next point. Total 125 MCQ are in the exam. To qualify the GPAT exam, it is enough to attempt 70 to 80 MCQ. Last 5 years, average cutoff of qualify the exam is for open and OBC 115 to 125 mark out of 500. ओके, तो आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कितने में कट ऑफ लास्ट ईयर का लगा है। बट इन लास्ट 2020 का जो एग्जाम हुआ अभी, उसमें कट ऑफ बहुत ही हाई गया था, नियर अबाउट 163 का कट ऑफ था और ओबीसी का जो है 131 का कट ऑफ था। एससी एंड एसटी का नियर अबाउट 100 के आसपास तक तो था। ओके, सो इफ यू टारगेट the rank in GPAT is or score the GPAT in 2020 175, then and then only you will be qualify the GPAT examination. Okay, if अगर तुम टारगेट रखोगे कि हमको जीपैट क्वालिफाई करना है तो तुमको टारगेट कितना रखना पड़ेगा, 175 का रखना पड़ेगा, तभी तुम क्या करोगे 150 टू 170 के बीच में आ सकते हो। ओके, अगर तुमने टारगेट रखा 175 का तो तुम 150 टू 117 के बीच में आ सकते हो। अगर तुम टारगेट रखोगे 150 का तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क मिलने वाले हैं वो 150 के कम ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। So if you target it then high, then and then only you qualify the GPAT examination. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, इधर फैक्ट बता रहा हूँ। ओके,
कि फैक्ट क्या है इन करंट सिचुएशन, हाउ द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस आर इंक्रीज। ओके, सो आपको पढ़ाई टेक्निकली करनी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, बुक्स भी पढ़ना है, देन एंड देन ओनली टारगेट 175 विल बी अचीव। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। Next slide, please, sir. If you attend 80 MCQ, from that around 50 MCQ right and around 30 MCQ wrong, your score will be 170 out of 500. अगर ये प्रेडिक्शन है, ये कंफर्म नहीं है, ये प्रेडिक्शन क्या है, अगर आपने क्या किया 80 MCQ अटेंड किए, ओके, उसके उसमें से अगर 50 MCQ आपके राइट आ गए और 30 MCQ आपके रॉन्ग हो गए, then your average score will be 170 out of 500. It means that it is qualify, it enough to qualify in open rank. Okay, अगर तुम 117 में मार्क मिलते हैं तो तुम जनरल कैटेगरी में पास हो और क्वालिफाई हो सकते हो, नॉट इन अ रैंक। जनरली इन एवरेज बाउंड्री लाइन यू आर definitely qualify. Okay, if you attend 70 MCQ, from that around 40 MCQ is right and around 30 MCQ is wrong, you will score will be 130 out of 500. Okay, this is a predictions about to qualify the GPAD examination. If you read carefully all the books, all the chapters, all the notes, then this is a prediction about that. Okay, above 130 is the safe score to qualify the GPAD examination. Okay, it is a safe score for the category and not for the open. Then next one is, but day by day increasing the competition, try to score above 150 for higher AI. मैंने पहले ही बताया था कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि कट ऑफ ज्यादा लग रहा है, इसके वजह से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टडी करनी पड़ेगी और मैक्सिमम रैंक का लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाउ टू स्टार्ट, अब जीपैड एग्जाम में कैसा स्टार्ट करने का है, कैसा प्रिपेयर करना है, हाउ व्हाट टू रेफर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट पॉइंट टू कवर आर ऑल इन कवर इन दिस presentation. Next point. According to previous paper, according to previous GPAT examination paper, we will cover or we will distinguish the major subject as well as minor subject according to their MCQ in the GPAT examination previous year paper. Okay, मतलब जीपैट एग्जाम में जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं उसके कंपेयर करते हुए हमने ये चार्ट बनवाया है कि मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं और माइनर सब्जेक्ट कौन से हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन आते हैं। सो मेजर सब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज दैट one of the most important subject and one of the most important scoring subject in the GPAT examination is pharmacology. Okay, first is pharmacology. Second one, in that pharmacology we previously discussed what is the importance of pharmacology. It's cover all of your medicinal chemistry subject also except structure and SAR. Okay, structure activity relationship एंड स्ट्रक्चर छोड़ के आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री सब जो है वो फार्माकोलॉजी में ही कवर होता है। देयर मोड ऑफ एक्शन, देयर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देयर drug interaction, their toxicity, their source different, their research. Okay, these are all covered in pharmacokinetic and dynamic parameter, also cover in the pharmacology subject. Only difference is that the structure activity relationship and the structures are covered separately from the medicinal chemistry subject. Next one is pharmaceutic subject. It is the second one most important subject to qualify or to rank in the GPAT examination 2021. Next one is medicinal or pharmaceutical chemistry. Next one, pharmacognosy. It is another one, 10 to 15 questions are asked from the pharmacognosy subject. Near about 10 to 15 questions asked from the
pharmacognosy subject. Okay, and it is easily solve, not a toughest question from the pharmacognosy. It is easily, if you read carefully, or the drugs like alkaloids, glycosides, terpenoids, all the things, then volatile oil, you definitely near about 10 questions are easily right from the pharmacognosy subject. Next one, another important is the pharmaceutical analysis subject. In that pharmaceutical analysis, main important thing is that your spectroscopy, in that UV spectroscopy, IR spectroscopy, NMR spectroscopy, and mass spectroscopy also. Then another important is that your chromatography, different chromatography techniques. These are the important things that have asked a maximum question in the GPAT examination. Okay. Then in the minor subject is that biochemistry, microbiology, biopharmaceutics, then dispensing and clinical pharmacy, pharmaceutical engineering, and pharmaceutical jurisprudence. These are the some minor subject and the major subject which are important for the GPAT examination. Next slide. Next slide. These are the some expert review. जो हायर रैंक आए हैं बच्चों के, जो हायर रैंक बच्चों के आए, जो टॉप 20 में आए हैं, उसका सम एक्सपर्ट रिव्यू लिया है हमने कि उन्होंने कैसी स्टडी की, जो उसका रैंक टॉप 20 में आया है, जो टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 20 में आते हैं, उन्होंने कुछ एडवाइस दिए है अपने को कि प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो रैंक है वो क्या होगा, हायर आ जाएगा. ओके, उसके उसका जो रिव्यू है हमने इसमें लिया है, बट टाइम की वजह से हमने जो ये रिव्यू है आपको शॉर्टकट में बता देंगे. If you got a higher score from the GPAT examination, for the GPAT examination 2020, we will definitely prepare from the last 1 year or 5 month, okay, properly. Then thoroughly and basic knowledge of pharmacy will make it easier to crack the GPAT exam. अगर आपके पास basic knowledge है pharmacy का, you will definitely qualify the GPAT examination. Not in rank, but definitely qualify in the GPAT examination. अगर आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है, और मैक्सिमम जो मेजर सब्जेक्ट है उसका अगर आपको बेसिक नॉलेज है, you will definitely qualify. One should start the preparation with main and hard subject like pharmacology, pharmaceutics and pharmacognosy. मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है 3-4 ये इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसकी वजह से ही जो बच्चे हैं वो रैंक में आते हैं. कौन सा? कोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकॉग्नोसी. Newer level easy subject like jurisprudence, dispensing, calculation, as they're very direct question from them, and if you have read them, it will help you score mark. अब जो माइनर सब्जेक्ट, आप क्या बोलेंगे, माइनर सब्जेक्ट है, जान दो, इसको छोड़ देंगे, बट ये कैसे होते हैं, इसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन ये डायरेक्ट आते हैं. अब जो हमने बताया था कि जो लेवल है एग्जाम का वो बढ़ गया है, इसके वजह से जो कोलॉजी का सब्जेक्ट है और जो शूटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें क्या कर रहे हैं, अभी लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बट ये जो माइनर सब्जेक्ट है लाइक जुरिस्प्रूडेंस है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, इसके कैसे पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लाइक शेड्यूल A to Y जो शेड्यूल है उसमें पूछे जाते हैं. उसके बाद जो एक्ट है, डिफरेंट एक्ट लाइक मेडिकल एंड टर्मिनेशन प्रिपरेशन एक्ट, देन ड्रग एंड मैजिक रेमेडिक एक्ट, DPCO ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल एक्ट, एक कब पास हुआ था, ऐसे इजी क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस के पूछे जाते हैं. ओके, PCI के जो मेंबर है वो कौन से रहते हैं. देन डिस्पेंसिंग फार्मेसी के जो कैलकुलेशन है, यंग्स फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला, वो भी डायरेक्ट एंड इजी रहते हैं. इसके वजह से इसको भी छोड़ना नहीं चाहिए. ये जो क्वेश्चन है जो कम पूछे जाते हैं, बट डायरेक्ट पूछने जाने की वजह से आपको ये कंफर्म और 100% मार्क देने ही वाले हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide.
Okay, one important note is that just reading a MCQ from book doesn't ensure success in GPAT examination. This is the most and underlinable note for all the GPAT aspirant is that just reading a MCQ from the books doesn't ensure success in GPAT examination. It works only sometimes. हाँ work करतो but दिस वर्क्स बट समटाइम्स ही वर्क करता है कि अगर आपने खाली एमसीक्यू पढ़े तो आपका जो नॉलेज है वो लिमिटेड रहता है, वो अनलिमिटेड नहीं रहता। अगर आपने क्या किया कि टैबलेट, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट चैप्टर है वो पूरा पढ़ा, ओके, अगर टैबलेट रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आपने वो पढ़ा भी नहीं होगा बट आप क्या करोगे, वो ऑप्शन देख के क्या करोगे, वो कट करोगे कि मैंने नहीं, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इधर इसका मैंने इधर पढ़ा है या उधर पढ़ा है। सो इसके वजह से जब आपने जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा, आप ऑप्शन डिलीट करने में आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इजीली क्या करोगे, ऑप्शन डिलीट करोगे। अगर आपको आंसर भी नहीं आता तो क्या कर सकते हैं आप, नहीं इसका ये आंसर नहीं हो सकता, इसका मैंने इधर पढ़ा था। ओके, सो just reading MCQ from books doesn't ensure success in the GPAT examination. Next point. So there are some major subject and their important topics, subject topics and reference books. Okay, some major or important major subject of GPAT exam 2020, their major topics, which are the major topics, and some important books of the GPAT examination. Okay, first subject is the pharmaceutics subject. Okay, in that pharmaceutics we all know about, okay, पहले से हम क्या पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक में, ऑल द टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, इसमें तो क्वेश्चन आते ही, बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज डे बाय डे इंक्रीज। सो we'll read the properly all the chart in लैकमन। ओके, लैकमन में जो भी चार्ट दिए है, टैबलेट रिलेटेड हो या कैप्सूल रिलेटेड हो, ऑल चार्ट आपको करने हैं। ओके, जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट है, डाइल्यूएंट है, बाइंडर है, इंग्रेडिएंट है, उसका जो केमिकल नेम है वो भी आपको उसमें पढ़ना है। ओके, सो ऑल चार्ट इन लैकमन आपको पढ़ना है। उसके बाद जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ऑल द सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस वो भी आपको पढ़ने हैं। मेक चार्ट दैट इज इनफ। अगर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के आपने चार्ट भी किए तो भी वो क्या हो, इनफ, लाइक ऑइंटमेंट एग्जांपल इसेक्ट्रा। देन टैबलेट, टैबलेट में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, डिजोल्यूशन apparatus है, डिफेक्ट्स है, कोटिंग डिफेक्ट्स है, ऑल द डिफेक्ट्स आर द इम्पोर्टेंट, और टैबलेट आर द इम्पोर्टेंट फॉर द GPAT एग्जामिनेशन। बट इन लास्ट ईयर सम क्वेश्चंस टैबलेट में क्या कर रहे हैं, अभी ज्यादा पूछ नहीं रहे, क्योंकि टैबलेट सब बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्यादा टैबलेट ही कर रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, लास्ट ईयर में टैबलेट पे ज्यादा क्वेश्चन ही पूछे नहीं थे। ओके, देन कैप्सूल करना है, एरोसोल्स, पैरेंटल प्रिपरेशन, स्टरलाइजेशन प्रिपरेशन एंड फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन कहाँ में से करने हैं आपको, रेमिंगटन में, रेमिंगटन जो बुक है उसमें से करने हैं। जो NDDS है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें से क्या करना है आपको, न्यूजोम, लिपोजोम, रिलीज एरिथ्रोसाइट्स। ओके, इतना सब आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब बुक्स देखिए, जो लैकमन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंस है, टैबलेट के लिए, सपोजिटरी के लिए, कैप्सूल के लिए एंड प्री फॉर्मुलेशन के लिए लैकमन आर द इम्पोर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट unsafe pharmaceutical dosage form, these are the important for aerosols, then parenteral and semi solid preparation। okay, unsafe का बुक जो है वो आपको एरोसोल और पैरेंटल और सेमी सॉलिड के लिए करना है। देन रिमिंगटन, प्रीवियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज द फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के लिए रिमिंगटन करना है। जो जो ब्राह्मणकर है वो क्या करना है आपको, NDDS के लिए करना है, और दूसरा जो बुक है वो NK जैन फॉर द NDDS के लिए, ब्राह्मणकर और NK जैन। देन CVS सुब्रमण्यम फॉर फिजिकल फार्मेसी एंड all those parts are useful for the CU, like a
फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको क्या करना है, सीवीएस सुब्रमण्यम रीड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। द लेवल ऑफ एग्जाम, प्रीवियस पहले ही मैंने आपको क्या बताया था कि अब क्वेश्चन कैसे, नॉट अ सिंगल लाइन, कभी कभी ऐसे टफ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इजी तो आप कर रही होगी, ओके, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इजी इजी क्वेश्चन आप 100% पढ़ रही होगे, बट अगर क्या होगा इस बार क्या करेंगे, अगर पेयर दी होगी, ओके, तो पेयर में क्या करना होगा आपको, अगर एक या दो को ही आंसर मालूम होंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। मैंने एक एमसीक्यू लिया है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं और पहले भी पूछे वाले हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कॉलम 1 में क्या है दिया है, उन्होंने डिफरेंट एक्सिपिएंट दिए हैं और दूसरे कॉलम में क्या दिया है, उसका रोल दिया है, ओके। एक एग्जांपल लिया है मैंने स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक एग्जांपल खाली, ओके। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 में क्या दिया है उन्होंने, कॉलम 1 में दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिपिएंट एंड कॉलम 2 द रोल ऑफ दैट एक्सिपिएंट, उसके आपको क्या करना है, मैच द पेयर करनी है, ओके। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, मॉनिटॉल दिया है, डीसीपी दिया है, मैग्नीशियम स्टीरेट दिया है, टाल्क दिया है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट दिया है और पीवीपी दिया है। इन कॉलम सेकंड में आपको क्या दिया रहा है, टैबलेट डाइल्यूएंट, फिल्म कोटिंग एजेंट, ग्लाइडेंट, च्यूएबल टैबलेट डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट एंड एंटरी कोटिंग एजेंट। अगर आपका एक या दो का इसमें से आंसर आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक या दो से क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो 100% श्योरली आप क्या कर सकते हो, उसमें की एक पेयर आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। बट हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया है। फर्स्ट जो है मैनिटॉल, वो सबको पता होगा कि इसका क्या यूज होगा, च्यूएबल टैबलेट डाइल्यूएंट, जो च्यूएबल टैबलेट है उसमें मैनिटॉल का रोल होता है, सबको मालूम है। उसके बाद डीसीपी, डीसीपी का ये कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, डीसीपी जो है वो क्या होता है, टैबलेट डाइल्यूएंट में ही यूज किया होता है, नॉट अ च्यूएबल बट जनरल टैबलेट डाइल्यूएंट में इसका यूज होता है। उसके बाद मैग्नीशियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट जो है वो किसके लिए यूज होता है, लुब्रिकेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद 4 टाल्क, इट इज यूजफुल फॉर ग्लाइडेंट। Then 5 number, cellulose acetate phthalate used for enteric coating agent and PVP is useful for the film coating agent. This type के match the pair question आपको इस एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Then the pharmacology subject. In that pharmacological, what should you do? Firstly, read all the classifications of pharmacology subject. Pharmacology subject के जितने भी classification है, डे बाय डे इसका क्या करना है, आपको रिविजन करना है। रिवाइज रेगुलरली द रिवाइज क्लियर रेगुलरली द फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। डे हर पर डे क्या करना है, आपको एक क्लासिफिकेशन और कवर करना है। हर रोज एक क्लासिफिकेशन लेना है और आपको कंप्लीट ही करना है। क्लासिफाई रेगुलरली इज पर डे 1 क्लास, ओके। इसके लिए उस विकास सेठी का जो पॉकेट बुक है क्लासिफिकेशन लिए वो यूज करो, और केदी त्रिपाठी का ही एक क्लासिफिकेशन का बुक है वो भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जो विकास सेठी का है उसमें एक चार्ट वाइज दिया है और जो केडी त्रिपाठी है उसमें डायरेक्ट सीरीज वाइज ही क्लासिफिकेशन दिया है। उसके बाद mechanism of action and adverse effect of drug, then drug interaction, general pharmacology, CNS, ANS, bioassay, anti-cancer, GI system, CVS, ये सब फार्माकोलॉजी में आपको करना है, ओके। अब इसके बाद जो बुक है, कौन से टॉपिक के लिए कौन सा बुक यूज करना है फार्माकोलॉजी का, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। जो रंगा एंड डेल बुक है उसमें क्या करना है, आपको ऑल द टेबल्स करने हैं और केमोथेरापेटिक्स एजेंट का जो चैप्टर है वो आपको रंग एंड डेल में से करना है। उसके बाद केडी त्रिपाठी, ऑल द क्लासिफिकेशंस आर रीड प्रॉपरली इन केडी त्रिपाठी बुक्स। देन
all the tables initial unit which include pharmacokinetics parameter and pharmacodynamic parameter. केडी त्रिपाठी का जो जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर है वो आप ध्यान से और केयरफुली पढ़ो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कोलॉजी के पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है मेटाबॉलिज्म पार्ट ऑल द उसमें एक्सप्लेन किया है, ड्रग इंटरेक्शन एक्सप्लेन किया है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एंड डायनामिक पैरामीटर का सब जो पार्ट है वो जनरल फार्माकोलॉजी में एक्सप्लेन किया है। और इसमें से कितने सारे एमसीक्यू आप अगर प्रॉपरली रीड करोगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ये जीपैड में पूछे गए हैं। ओके, सो रीड प्रॉपरली दैट जनरल फार्माकोलॉजी फ्रॉम द केडी त्रिपाठी। ओके, और सातोस्कर और भंडारकर का एक सब्जेक्ट है, सातोस्कर एंड भंडारकर, ऑल द डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आर रीड फ्रॉम सातोस्कर, then treatment and management also read from Satoskar. Then firstly think that the two books are sufficient for the pharmacology, that is KD Tripathi, and second one is Rung and Dale. If you read two subjects properly, okay, if you read two books, that is KD Tripathi and Rung and Dale, it's sufficient for the pharmacology subject, but these also additions for the score or rank for the GPAT examination. Then Roller and Walker, all the areas read from this. Then Lippincott, individual prototype drugs are in depth from the Lippincott. जो ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे लेप्रोसी का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, डैप्सोन, ऐसे ही सब डिसीज है उसके जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो किसमें से पढ़ने आपको, लिपिनकॉट में पढ़ने हैं। ओके, देन एचएल शर्मा, द पॉइंट इज इम्यूनोलॉजी, टॉक्सिसिटी एंड बायोअसे, रीड फ्रॉम द एचएल शर्मा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। There are some few example from the pharmacology subject. There are some type, मैंने इसमें टाइप भी लिए है कि कौन से टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस के क्वेश्चन, देन सोर्स के क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के क्वेश्चन कैसे पूछे हैं इसमें बताया है। ओके, अब चैट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो कि what is the answer or what is the gray baby syndrome occurs due to the toxicity of. Okay, first question is that gray baby syndrome occurs due to the toxicity of digitalis, rifampin, chloramphenicol and isoniazid. Okay, gray baby syndrome occurs due to the toxicity of. Okay, आप इसका आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। Then next is drug of choice. Okay, drug of choice from the filariasis. Okay, we all know about the filariasis. It is elephant type legs occurs in the filariasis. मराठीत जर म्हणायला गेलं त्याला हत्ती पाय रोग म्हणतात. ओके, देन राइट ऑप्शन सी, chloramphenicol, gray baby syndrome occurs due to the chloramphenicol. All are know about the chloramphenicol. Then second question is drug of choice for filariasis, metronidazole, then dapsone, then sodium stiboglycolate, SSG. Okay, DDS means short form there, dapsone, SSG means sodium stiboglycolate, and another one is diethyl carbamazine. These are the option for drug of choice for filariasis. आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है वो भी कोलॉजी के सब करने हैं। ओके, different drug of choice. Okay, filariasis, leprosy, gout, all the different things, types of drugs are read carefully for the drug of choice. Okay, what is the option of drug of choice? Yes, answer please. Right, D is the right answer for the filariasis. Diethyl carbamazine citrate is the drug of choice for filariasis. Then सोर्स ऑफ अम्फोटेरिसिन बी, थर्ड क्वेश्चन। सोर्स में भी आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ड्रग है उसका जो सोर्स है, मतलब जो नेचुरल ऑकरिंग ड्रग है लाइक पेनिसिलिन हो गया, ओके, उस
इस टाइप ऑफ जो एंटीबायोटिक्स है उसके जो सोर्स है वो भी आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं, लाइक अ सोर्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी. In that, the amphotericin B, first option is Streptomyces nodosus, second option Streptomyces erythraeus, third option Bacillus subtilis, and fourth option none of the above. Yes, answer please. Source of amphotericin B. Yes, source of amphotericin B. Okay, next slide. The option is first. Streptomyces nodosus is the source of amphotericin B. Next slide, sir. Okay, third point is the, or third main subject is the medicinal chemistry. In that, read properly Wilson and Glycerol and Foe. These are two subjects are sufficient for the medicinal chemistry subject. Structure and structure activity relationships are properly mentioned in Wilson and Glycerol and Foe, and SN Pandey is useful for the all chemical reactions. All the chemical reactions are properly mentioned in SN Pandey. But two books are sufficient for the medicinal chemistry like Wilson Glycerol and Foe's. Two books are sufficient for the medicinal chemistry. In that classifications are then stereoisomerism, mechanism of action, metabolisms. Okay, all the synthesis or chemical reactions are read from the SN Pandey or Ashutosh Kar. Okay, these are useful for the synthesis and the chemical reaction. Subject is SN Pandey. Okay, next point, next slide. Okay, books for FOE only structure. Next, pharmaceutical analysis. Okay, the main important another next slide, sir. Okay, pharmaceutical analysis. Okay, the pharmaceutical analysis main importance in that two topics are main importance in the pharmaceutical analysis. First one is spectroscopy. In that UV visible spectroscopy, NMR spectroscopy, IR spectroscopy, and mass spectroscopy. Okay, these spectroscopy are read properly from PAVIA, one of the standard group or one of the reference group from the pharmaceutical analysis. If these are the read toughest, then you should prefer a Chatwal. Anand Chatwal is also important group for the pharmaceutical analysis. Okay. Next one is all the problems in the UV visible spectroscopy. One important rule is in that Woodward-Fisher rule. One or two questions are uh, in last previous year GPAT examination from this topic is Woodward-Fisher rule. Okay, this rule में से मैक्सिमम वन और टू क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे ही गए हैं वुडवर्ड फिशर रूल के. उसमें से जो डिटेक्टर है, हर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें से डिटेक्टर भी इंपॉर्टेंट है. डिटेक्टर में भी क्वेश्चन पूछे वाले हैं. उसके जो रेंजेस है यूवी विजिबल के रेंज, then IR range, NMR range, mass range, all the ranges are important. Okay, then all the problems are from YR Sharma. Chromatography method detectors from Remington. Assay from Piyush publication. These are only two books are sufficient, that is Chatwal and Pavia. Next slide, sir. Okay, I will take only one example from this pharmaceutical analysis, that is which detector used in UV visible spectroscopy, that is PMT, phototube, photodiode array, or all. These are the some example of pharmaceutical analysis. Okay, which detector are used in the UV visible spectroscopy? Answer is
Okay, answer is all the detector are used in the UV visible spectroscopy. There are different types of MCQs occurs in the pharmaceutical analysis subject. Next one, then the pharmacognosy subject. These are the important and interesting subject for the GPAT examination and one of the also scoring subject, because pharmacognosy जो subject है इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम रॉन्ग नहीं होते. ओके, दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट और सबसे कम क्वेश्चन जो रॉन्ग होते हैं वो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के ही होते हैं. ओके, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते, इसकी वजह से फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट इज आल्सो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है. इसकी वजह से दो बुक ही इंपॉर्टेंट है, लाइक गोखले कोकाटे, ओके, एंड खंडेलवाल. ये दो बुक सफिशिएंट है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के लिए. ओके, इन दैट द जनरल फार्माकोग्नोसी इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द गोखले एंड कोकाटे फ्रॉम द स्टार्टिंग पेज. इन दैट द डिफरेंट साइंटिस्ट नेम्स आर रिटन इन द स्टार्टिंग पेजेस. ओके, जो रिसर्च है वो क्या हो, कौन सा रिसर्च किसने किया है, वो जो पूरा है वो गोखले कोकाटे में स्टार्टिंग पेज में ही दिया वाला है. ओके, ऑल द बायोसिंथेसिस पाथवे, और बायोसिंथेसिस पाथवे पूरा नहीं करना, इसमें से जो प्रिकर्सर है वही प्रिकर्सर आपको करने हैं. बायोसिंथेसिस पाथवे के प्रिकर्सर कौन से यूज होते हैं. उसके बाद प्लांट टिश्यू कल्चर, डिफरेंट केमिकल टेस्ट, these are important and maximum ask question from the chemical test. That is the, for example, Kilani test, brown tiger test, which color, which chemical agents, and which type of test used for the substance. These are important. Okay, next one is previous slide, sir, please. Previous slide, sir, please. Okay, then starting from you. If you read a general pharmacognosy, then start the firstly alkaloid, then glycoside, terpenoid, and volatile oil. The alkaloids and glycosides, the maximum question asked from in cognosy in the alkaloid topics and the glycoside topic, in their classifications, all the drug, their general name, then biological source, chemical constituent. Okay, microscopy, all the question arise from this alkaloid and glycoside. All the important drugs read regularly from the Gokle and Kokate. Okay, then is the quantitative determination also from the Gokle and Kokate. Okay, these are the important subject for the rank in the GPAT examination. Next slide, sir, please. आपके जो घर में है एक ऐसा चार्ट बना के रखना है. ओके, सम इम्पोर्टेंट ड्रग, देयर सिनोनिम, देयर विच पार्ट यूज, लाइक उसका स्टेम यूज होता है, उसका रूट यूज होता है, उसका बार्क यूज होता है, उसका एरियल पार्ट यूज होता है, उसका लीफ यूज होता है, उसका बल्ब यूज होता है, उसका फ्रूट यूज होता है. ऑल आर mentioned in this type of chart. Then BS only source and their family. आता तुम्हारा it's obtained from this type of source, ऐसा काहीच लिहायचं नाही, फक्त उसको क्या लिखना है आपको, written only their biological source and their family. First written their synonym, then which part used, then their family and their base, then chemical constituent, adulterant and main use of that drug. ओके, जो अल्कोलॉइड है और ग्लाइकोसाइड है, उस ड्रग के आपको क्या करना है, खाली सिनोनिम लेने हैं, उसका विच पार्ट यूज होता है, फैमिली क्या है उसकी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का है, और ये जो क्या करना है मैक्सिमम डिस्कस करना है. अगर आप डिस्कस नहीं करोगे आपका सब वोलाटाइल हो जाएगा. ओके, आपने पढ़ा, अगर डिस्कशन नहीं किया तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द जीपैट एग्जामिनेशन इज द डिस्कशन. अगर आप डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा नहीं करोगे आपका जो रीड किया वाला है वो क्या होगा, वोलाटाइल हो जाएगा. ओके, सो मेन importance in the GPAT examination is the discussion. Okay, if you prepare a chart then read regularly, but if you ask some question then you are
like a volatile. Okay, then and then only solve the question. आपको रीड करना है, उसके बाद ही उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने। आप क्या करते हो, पहले उसको पढ़ते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व अगर आपने किया तो आपका क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे कि आपको आंसर नहीं आया, तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसकी वजह से क्या करो, आप टॉपिक ले लो, उसको पढ़ो, उसके बाद उसके जो एमसीक्यू वो क्या करो, आप सॉल्व करो। विदाउट टॉपिक रीड किए हुए आप एमसीक्यू स्टार्ट मत करो। अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा आए तो आप क्या होगे, हाइपर हो जाओगे, और आपके क्वेश्चन नहीं आए तो आप क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। उसके लिए आप पहले रीड करो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं क्वेश्चन कुछ समझ में आया, फिर से रीड करो और आगे जाओ। ओके, देन in the that drug, what is the important stomata, some few drugs are some with different type of stomata are present, then trichome, chemical test। ओके, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, किस टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट है, बार्क, स्टार्च, ल्यू, ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। There are few example from the pharmacognosy subject. The first question is the source of codeine is, okay, these are the general question from the pharmacognosy subject, not a hardest and toughest questions are asked from the pharmacognosy subject। okay, हार्ड एंड टफेस्ट क्वेश्चन किस में से क्या पूछे जाते हैं फार्माकोग्नोसी में, ओनली फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो माइक्रोस्कोपिक और मार्फोलॉजी है उसमें ही टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदर वे जो अदर क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी के वो वन लाइन क्वेश्चन ही होते हैं। ओके, जो फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन है वो खाली दो टाइप में, अगर उसका माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर आया और मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर आया, उसमें ही उसका क्या किया जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाय अदर इसमें क्या कहते हैं, वन लाइन क्वेश्चन ही फार्माकोग्नोसी में पूछा जाता है। ओके, द सोर्स ऑफ कोडिंग इज एग्जांपल ओपियम, बूम, एलएसडी एंड मेलफर्म। ओके, next one is colchicum is used to cure, okay, colchicum is used to cure CCF, then peptic ulcer, gout and leprosy. These are the example or this type of question asked from the pharmacognosy subject। okay, colchicum is used to cure the gout। gout के लिए क्या होता है, colchicum यूज होता है। उसके बाद जो कोडिन है उसका सोर्स कौन सा है, तो ओपियम इज द सोर्स ऑफ कोडिन। नेक्स्ट पॉइंट, then the microbiology and the immunology, the microbiology subjects are explained best by the BAVSKAR sir from the last lecture। so this topic I have ये टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट सर, then biochemistry the one of the best book is the Satyanarayan। okay, the main and only one books are prefer for the biochemistry is the Satyanarayan। in that the question asked from the vitamin and enzyme, maximally ask a question from vitamin, enzyme and carbohydrate। okay, प्रोटीन में भी पूछे जाते हैं बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द विटामिन्स, देयर स्ट्रक्चर, यूजेस, डिफिशियंसी, केमिकल नेम ज्यादा से ज्यादा और डिफिशियंसी विटामिन की ज्यादा से ज्यादा पूछी जा सकती है। उसके बाद एंजाइम का पूछे जा सकता है, एंजाइम और हार्मोन का इतना नहीं पूछे जा सकता बट विटामिन्स आर इम्पोर्टेंस, देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। Then clinical pharmacy importance is that drug interaction and drug food interaction, ADR also important। okay, अब some इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि which drug affecting during pregnancy और which drug contraindicated during the pregnancy, like streptomycin drug generally contraindicated in the प्रेगनेंसी। उसका रीजन भी आपको क्या करना है कि क्यों स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, विच ड्रग दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो लिस्ट ही आपको बनानी है और वो पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड,
pharmaceutical jurisprudence, in that mainly schedules are important. BS Kushekar is one of the important book and sufficient book for the pharmaceutical jurisprudence. Mainly 2 to 3 questions, 2 to 3 questions are from the pharmaceutical jurisprudence. It is a one line question and very easy question to qualify or to solve the MCQ. इसमें से क्या आते हैं, वन लाइन क्वेश्चन आते हैं और इजीली क्वेश्चन आते हैं. लाइक शेड्यूल, जो शेड्यूल है डिफरेंट, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाते हैं. उसके बाद जो एक्ट है, डिफरेंस एक्ट, मैंने पहले ही बताया, जो लाइक ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल एक्ट, उसमें से जो रिवीजन है वो कैसा हुआ. उसके बाद प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल एंड टर्मिनेशन एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, पेटेंट एक्ट, ये जो एक्ट है वो कौन से साल में पास हुए, ये भी आपको उसमें से ज्यादा पढ़ना है. उसके बाद कमिटी मेंबर, ओके, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 तो इंपॉर्टेंट, शेड्यूल, एक्ट एंड डिफरेंट कमिटी मेंबर, 3 इंपॉर्टेंट उसमें से पढ़ लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, then physical pharmaceutics, important subject, important books is the CVS Subramaniam and Martin. One are the sufficient book for the physical pharmaceutics. Different rheology, drying, micrometrics are the sufficient for the rate of kinetics. CVS Subramaniam. Next slide. These are the minor subject. Then organic chemistry. In that organic chemistry, one is important thing for the rearrangement is SN Sanyal, best book for the organic chemistry. उसके बाद जो important subject for maximum question organic chemistry के नाइपर एग्जाम में पूछे जाते हैं organic chemistry related. ओके, rearrangement हो या अदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइपर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है. बेसिक फॉर केमिस्ट्री, देन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट, जनरल रिएक्शन से क्या होते हैं, जीपैट में कम पूछे जाते हैं बट नाइपर एग्जाम में इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट. बायोफार्मास्यूटिक के लिए ब्राह्मणकर, इंपॉर्टेंट चार्ट कर लीजिए खाली ब्राह्मणकर में. ओके, लास्ट स्लाइड प्लीज सर. Last slide. Second last. Next. Okay. आपको क्या करना है, प्लान यूर स्टडी वेल. ओके, प्लान स्टडी यू वेल, रेगुलरली आपको स्टडी करनी ही है. खाली 2 मंथ बाकी है, उसमें से ज्यादा आपको प्लान करके पढ़ाई करनी है. उसके बाद कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूटी करनी है. कॉन्फिडेंसली एमसीक्यू अटेंड करने है. जो आपने चैप्टर किया है उस चैप्टर के कॉन्फिडेंटली रेगुलरली आपको क्या करने हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. अगर आपने चैप्टर रीड किया उसके बाद आपने अगर एमसीक्यू सॉल्व किए तो आपको रियलाइज होगा और रिकॉग्नाइज होगा कि आपको कितना याद रहता है. ओके, आप चैप्टर पढ़ते जा रहे और क्या हो रहा है, आपका सब वोलेटाइल हो जाएगा. इसके वजह से आपने अगर सुबह में जितने चैप्टर पढ़े उसके एमसीक्यू क्या करो, आप शाम को पढ़ते जाओ. हर रोज अगर आपने सुबह क्या किया, फार्माकोलॉजी का एएनएस पढ़ा और सीएनएस पढ़ा, उसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है वो क्या करो, सॉल्व करो. किधर आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो क्या करो, उसको हाईलाइट करो और क्या करो, बाद में सॉल्व करो, बट उसको सॉल्व करो. डिफिकल्ट क्वेश्चन ही ज्यादा आपको उस पे पूछे जा सकते हैं. इसकी वजह से जो दिन भर आप रीड कर रहे हो, जो भी दिन भर आप रीड कर रहे हो, वो कौन सा ही सब्जेक्ट हो, ओके, वो फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोलॉजी हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, फार्मास्यूटिक्स हो या कौन सा भी सब्जेक्ट हो, उसको हर रोज शाम में क्या करना है, आपको उसके एमसीक्यू सॉल्व करने ही है. उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेनली कंसंट्रेशन. ओके, कंसंट्रेशन. यूज मोबाइल ओनली फॉर द सॉल्व द एमसीक्यू. डू नॉट रीड द सब्जेक्ट नोट्स और नोट्स फ्रॉम द मोबाइल में से ज्यादा नोट्स पढ़ाई नहीं करनी है. यूज ओनली बुक्स.
बिकॉज क्या होगा, अगर आप मोबाइल में स्टडी करेंगे, मोबाइल में स्टडी करने के बाद क्या होता है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है, क्योंकि आप ऑनलाइन रहोगे। अगर आप ऑनलाइन रहोगे तो किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, किसी का इंस्टा का मैसेज आएगा, किसी का फेसबुक का मैसेज आएगा, और आपका आपका 1 आवर उसमें कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके वजह से क्या करो आप, आपका जो रीडिंग है वो खाली बुक में ही करो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन है वो क्या करो, मोबाइल में सॉल्व करो। ओके, ओनली यू रीड फ्रॉम द बुक। देन रिव्हिजन अँड ग्रुप डिस्कशन, थिंग्स आर व्होलाटाईल। कुठलीही गोष्ट काय असते, कुठलीही गोष्ट काय असते, व्होलाटाईल असते। त्यामुळे काय असतं, आपल्याला रिव्हिजन अँड ग्रुप डिस्कशन, मैंने पहले ही बताया था कि रिव्हिजन एंड ग्रुप डिस्कशंस आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द जीपैट एग्जामिनेशन। जो लास्ट 7 डे हो और लास्ट 15 डे आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना, खाली रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर आप एग्जाम तक पढ़ते जाओगे, दिस इज नॉट अ your university exam, it is a GPAT examination. Okay, so don't read last 15 days new things. Okay, त्यामुळे इसके लिए आपको क्या करना है, रीड रेगुलरली, ग्रुप डिस्कशन रेगुलरली। ओके, देन यू रिकॉग्नाइज कि आपको कितना आता है, और ग्रुप डिस्कशन कैसा करो जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आप आपसे कम ज्यादा इंटेलिजेंट से अगर आप ग्रुप डिस्कशन करोगे तो आपको क्या होगा, एक हाइपर हो जाओगे कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। बट अगर आप अपने एजुकेटेड स्टूडेंट से अगर आप डिस्कशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ओके, आप कितने पानी में हो। उसके बाद सर्च एंड कलेक्ट, जितना जिधर आपको जो भी मिलेगा वो क्या करेगा, सर्च करो, कलेक्ट करो, पढ़ाई करो। उसके बाद ट्राई टू मार्क पॉइंट इन बुक व्हाइल फर्स्ट रीडिंग एंड देन मेक अ सेटिंग रीडिंग शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो तो क्या करो, आप उसमें बुक में पॉइंट करते जाओ। ओके, अगर आप सेकंड रीडिंग कर रहे हो वो खाली क्या करना है, आपको पॉइंट ही पढ़ने हैं, पूरा बुक नहीं पढ़ना। ओके, फर्स्ट अगर आप क्या कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो तो मेक अ पॉइंट, second book only read a point. Then if time permits, please go through other least important topic also to minimize the risk factor. Okay, these are also important thing. Then read classification daily, ये मैंने पहले भी बताया कि classification daily आपको करना है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट लक फॉर योर GPAT 2021 एग्जामिनेशन। थैंक यू सर।